Good afternoon, everyone. I hope I am audible to you. Good afternoon, everyone. Yes, Anuradha, you are audible. Yeah, Thank yeah, you you so much, are ma'am. audible. Good afternoon to everyone present here. And it gives me immense pleasure to welcome eminent personalities on such a beautiful day. Today, we are organizing national seminar on the topic Academic Bank of Credits for academicians of India who wants to explore myriad layers of national education policy with an innovative lens. I welcome our distinguished dignitaries, Dr. Mamta Sharma, Principal, Aditi Mahavidyalaya, Dr. Namita Rajput, ma'am from Arbindo College, University of Delhi, my worthy principal, Dr. Kiran Angra, co-convener of the event, Mrs. Nishu Bansal, and all the other dignitaries who have joined today to make this webinar a great success. My gratitude goes to Dr. Kiran Angra for giving all of us such a wonderful opportunity to organize such an important seminar. Uh, Now, I request our worthy principal ma'am to take over the stage and welcome our dignitaries in a formal way. Over to you, ma'am. Starting हो गई है proper. Good afternoon to all of you. It's very nice to welcome Dr. Namita Rajput and my co-convener, Dr. Mamta Sharma. Dear friends, first of all, I like to share my happiness and share my pleasure by holding this seminar along with Mamta Sharma ji, who's principal of Aditi Mahavidyalaya. And I am proud to announce, I'm proud to say the linkage between me, our M.D.S.D college, Ambala city, and Aditi College, Aditi Mahavidyalaya College in Delhi. The linkage between both of us is again Dr. Namita Rajput. Because of her, we are here together, the faculty of both the colleges, or on this virtual platform. I know many of us are from Ambala and around, who has many times joined with the joint ventures of our college. But for Aditi Mahavidyalaya, this is for the first time. I said, I will like to introduce, first of all, the principal, the learned principal, Mamta Sharma ji, and make you to have a bird eye view because she has so many things to her credit. If I read, hopefully Dr. Namita Rajput will not get the time to spend with us. So dear friends, Dr. Mamta Sharma is principal for more than 8 years in this college. And Professor Kiran, please unmute yourself. You're muted. thank you so much, Namita ji. Dr. Mamta Sharma is the principal. She has been the principal investigator of many projects which are being sponsored by University of Delhi or DST or other related such research organization. To her credit, she has more than 43 research papers and has published 4 books. She is associated with a number of professional bodies as a life member and has contributed a lot to those bodies. Dear friends, she has been awarded and adored with number of distinctions. And in very short, it's a huge list in front of me. In very short, I'm giving you few. She has certificate of appreciation by Mahatma Gandhi National Council of Rural Education, Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India for promotion of green activities on the occasion of World Environment Day. She has been facilitated by green thinkers
Society with International Educator Award. She has been awarded by Istri Shri Award for contribution towards women empowerment. She has received Icon of Higher Education Award 2019 by International Development Center Foundation from Rajya Sabha, MP Shri Vijay Singh Tomar at India International Center in December 2019. Received Outstanding Educator of the Year Award by Viklang Sahara Samiti Delhi for service towards persons with disability sector. Honored and facilitated by Her Excellency Katrina Kampov, Deputy Chief of Mission Embassy of the Slovak Republic in India for remarkable contribution in the field of rural girls at state and national levels. Honored by Vishwa Yuva Kendra on the occasion of International Women's Day. She has been honored by various organizations, various NGOs like Bharat Vikas Parishad and many more other. I have read the honors or the distinction she received in different fields so that you can get an overview. Although she is principal, she is doctorate in chemistry. She's a person of polymers, and both of us are from the polymer technology. And both of us has done research in polymers. In spite of that subject of chemistry, she could read the vibrations, chemistry of the woman. She could read, she could work in the for the disability people with the disability. She could see the rural background people, women. She can work for the different fields. So dear friends, just a view that these, in addition to it, there are a number of felicitations by different organizations are to her credit. In addition to this, she is a certified Bosch trainer. So with this very short, very precise, just a view of my co-convener, Mamta Sharma ji, for the introduction to all who are new to us, who has joined in this seminar for the first time. So from this platform, I like to say that this has been on the very important topic for us, that is the ABC. That means Academic Bank of Credit. This is a concept which has been in the National Education Policy 2020 that deals with the credits earned by the student of higher education institutes in India. Basically, it is a digital storehouse that contains the information of credits earned by individual students in different institutes. Now you are going to have a long ground to learn in different institutes the subjects which interest you. There will be a graduation, or like we say the BA or BCom or BSc. Like this, we are not going to have this system, but we will be getting the degrees in graduation or post-graduation, like with the majors and minors. Now, it's not important you to continue in one institute, but you can join the umbrella of institutes or the cluster of institutes, and you can earn your credits in those institutes. So this is the very important concept. Earlier, the universities are going forward towards ABC. Only when the university would have allowed us, the individual colleges, then only the colleges can go ahead with this credit system. But now the UGC has instituted something, some different changes in that. And those changes are very important for all of us to understand. Can our colleges go for ABC's digitalization of the students' records or not? So for this, we have requested Dr. Namita Rajputji to just throw the light and enlighten us how to go about the national education policy. I'll be glad to tell everyone here that Kurukshetra University in Haryana is one of the pioneer universities to start this National Education Policy 2020 last year in the Constituent College of Kurukshetra University. But now
they have determined, and the government of Haryana has taken very strong steps to start this system in the different affiliated system of universities existing in Haryana. So dear friends, now what the relaxation has been given to all of us by the UGC regarding this system, because the sessions will be starting way back in July and August. So before that, we need some preparedness. For that, we should understand how, whether we can or whether we cannot. If we can, then how to proceed about it. So for that, I request, first of all, my colleague, IQAC coordinator, Dr. Anuradha, to introduce our learned, esteemed, enlightened, visionary, and dash many, many infinite adjectives to loving dear Namita Rajput. First, kindly introduce her to all of us so that she can start her address. I welcome you again. Welcome you. Thank you, all of you. Thank you, Kiran ma'am. Thank you so much, ma'am, for welcoming our distinguished personalities over here and for giving us permission to organize such a wonderful seminar. It is my pleasure and honor to welcome and introduce our guest speaker, Professor Namita Rajput, who has served as Principal OSD at Sri Aurobindo College, Evening University in Delhi for a term of 3 years. She has an enriching experience as professor since July 2018 in the Department of Commerce, Sri Aurobindo College, and associate professor since December 1, 1995. Before 1995, she was teaching in other premium colleges of the University of Delhi, like Kamla Nehru College, Venkateshwara College, Shivaji College since August 1991. So, about 3 decades of experience. She has completed her master's in commerce, securing first division from Hindu College and from the University of Delhi, followed by MPhil and PhD in International Business, Delhi School of Economics, and a postdoctoral research fellowship program in finance from the Department of Financial Studies, South Campus, University of Delhi. She is a certified lead auditor for quality standards ISO 9001-2015 and ISO 45001-2018. She is a national trainer for accreditation of HEI, NAC, and NIRF, and associated with IQAC Cluster India as a national resource person. Apart from the above mentioned, she also holds a master's degree in information technology, pursued a Microsoft certified course in cyber law, procured Sun certificate from Sun Microsoft, and holds a certificate course in computer science issued by the Institute of Advanced Computing and Management MOOCs from the prestigious universities like Harvard Business School, MIT University of Leeds, etc. She has contributed tremendously in the area of research, primarily focused on areas concerning finance, human resource management, CSR, and sustainability and higher education. Over 200 conferences, proceedings, and publications, research papers, projects, and books in a plethora of listed journals are credited to her name, out of which over 70 are published in Scopus ABDC and journal listed in UGC Care. She has been invited as a delegate on numerous occasions, participated and presented papers in over 150 national as well as international seminars, and invited for lectures in international universities. Furthermore, she has published over 30 books and contributed many chapters to other respected publishers, including Bloomsbury Publishing, Springer, Texman Publication, International Book House, Lambert, Academic Publishing, etc. She is credited with the copyright of 3 theories, the Bahag theory of leadership, the 3 E's of motivation, and 3L theory of work culture, registered with the Government of India, along with 17 more in allied areas and 2 Canadian copyrights. She has also composed 34 modules for UGC project e-Pathshala and has delivered about 224 invited lectures in CEC UGC on Gurukul Live lectures and has contributed to the University Grants Commission.
University of Delhi and Ministry of Corporate Affairs, and several government projects in various capacities. She has been awarded by Ministry of Culture and facilitated by Education Minister for her contribution in higher education. She is associated deeply in the work of accreditation of higher education institutions. She is impaneled in Ministry of Women and Child Development as coach enabler, practitioner, and trainer. She is an expert member in Quality Council of India. She is impaneled in Ministry of Women and Child Development as coach enabler and practitioner. She is a director, UNHAD Foundation, and NGO catering to the need of the underprivileged children of the society. Ma'am, we are really grateful to you that you are here with us, and our participants are also thankful to you. And I welcome you on the dais to start your lecture. So first of all, my greetings and salutations to the organizers, that is the principal ma'am, Kiran ma'am, and Professor Mamta Sharma, for giving me a dais to give my views on a very pertinent and important topic, which is rightly to be implemented because of the implementation part of the NEP 2020. And from this academic year, which is going to start in July and August, every educational institute and academic institute have to have this system in place. So starting with my, the lecture straight away. So basically the academic bank of credits it is not a normal bank. It is definitely a bank which is, giving a liberty in terms of the students to store the academic credits earned from the various recognized higher education institutes, so that the degrees from an higher education institute can be awarded taking into account the credits earned. I have been specifically requested from the Aditi Mahavidyalaya, which is a rural college, to because there are participation from the every nook and corner of India, to use both the languages to make this particular lecture a meaningful lecture. So I will be using both the mediums here. So basically, to start my initiative on this part, the Academic Bank of Credit, ABC. So ABC is basically what? It is not an apple boy and a child. It is a bank. And it is not a bank in terms of holding our financials. It is a bank to hold our degrees, right? Our certificates, our diplomas. So it is a digital platform which is started by University Grant Commission. So since in the light of the education policy of 2020, the implementation part, etc. To have academic bank of credits in place is very, very important. So it is a repository of academic credits earned by a student during their course of study in the higher education institutes in India. The credits earned by a student can be transferred across the institutions in the country, making it very easier for the students to continue their education without having to repeat the courses or undergo the unnecessary training. So ABC is aimed at promoting the flexibility in the higher education, fostering the recognition of a lifelong learning, and encouraging the creation of a knowledge-based society. थोड़ा सा मैं हिंदी में बात करती हूँ. Academic Bank of Credits क्या है? Academic Bank of Credits ये है कि जैसे आपके स्टूडेंट्स आपकी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो आप उनको प्रमोट करेंगे कि आप प्रमोट क्या करेंगे? अब तो ये मैंडेटरी है इस एकेडमिक ईयर से कि as soon as they take admission in your college or any academic institution, and they call it as AI, that is the academic institution. So it is mandatory for the college to have the ABC ID of every student, right? This is the academic bank of credit. So अब आप जो admission forms भी छपवाएंगे, prospectus भी छपवाएंगे, तो उसके अंदर you have to make a mention about the academic bank of credits. तो आपको हर स्टूडेंट को के फॉर्म के ऊपर उनकी ABC ID का कॉलम भी आपको एक देना पड़ेगा, right? This is one thing.
सेकेंडली, जितने भी बच्चे आपके रूटीन सब्जेक्ट्स को कॉलेज में पढ़ेंगे, इसके अलावा आप उनको पुश कर सकते हैं कि आप एक कोई भी क्रेडिट या 2 कोई भी क्रेडिट आप इस इंस्टीट्यूट से, और ये रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, and they have the proper say accreditation of that particular course, and if you do this course online, you will be able to earn 3 credits or 6 credits or 4 credits, and that will be added to your bank account, right? So you have to have one nodal officer appointed in the college who will be taking care of the facilitation and making the system of academic bank of credits in place, right? तो जितने भी इंस्टीट्यूट्स अभी यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हैं, और इसके बाद आप M.D.S.D गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे भी ये वाला लेक्चर आप देख सकते हैं, एंड टू सर्व द पर्पस ऑफ डिसेमिनेटिंग द नॉलेज इन टर्म्स ऑफ द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, मैं ये वाली प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइजर्स को शेयर कर दूंगी, और ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं स्टेप टू स्टेप गाइड इसमें आगे आपको दूं, और वो जैसे जैसे स्टेप्स लिखे हैं वैसे वैसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस अपना एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं, और बच्चों के पास 4 तरीके के ऑप्शन हैं कि वो 4 तरीके से अपना बैंक ABC अकाउंट और ABC ID क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अब जो बच्चे नया एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि वो इस सिस्टम को समझे और इस सिस्टम को पहचाने, राइट? सो दिस पर्टिकुलर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इट इज एन एकेडमिक बैंक which will store the credits which are earned by the students, so that after the threshold limit is reached, they will be either allowed a certificate or they will be allowed a diploma, and they are also eligible to have a particular degree in that particular field, right? तो बच्चों के पास ये 3 ऑप्शन रहेंगे कि वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद, अब जैसे आपने बीकॉम में या बीए प्रोग्राम में किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया, उस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के बाद बच्चे जो क्रेडिट्स अर्न करेंगे उसके बेसिस पे वो सर्टिफिकेट्स भी ले सकते हैं, उसके बेसिस पे वो डिप्लोमा भी ले सकते हैं, और उसके बेसिस पे अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट तक पहुंच जाते हैं तो उनको वो डिग्री भी मिल सकती है। तो ये मल्टीपल एग्जिट और एंट्री पॉइंट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स आपको प्रोवाइड करता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप which has been initiated by University Grant Commission in India to have a digital repository of your academic credits earned by the students during their course of study in the higher education institutes in India. मैं इसके बाद आपके लास्ट में थोड़ा सा टाइम जरूर रखूंगी कि थोड़ा जितना भी मुझे नॉलेज हो पाई है, बिकॉज इस पर्टिकुलर वर्कशॉप के लिए मैंने काफी वीडियोस को और काफी रिसोर्सेज को मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी स्कैन किया है, ताकि मैं आप तक एक अच्छी नॉलेज दे सकूं और आप इस चीज से आप बेनिफिट हो सके। तो ये देखिए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपने घर पर एक मूक्स कोर्स में, जो कि स्वयं प्लेटफॉर्म पे है, और स्वयं प्लेटफॉर्म जो है आप अपने मोबाइल की ऐप में भी डाउनलोड कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें अपकमिंग कोर्सेज की इंफॉर्मेशन भी होती है, और उसके अंदर जो ऑनगोइंग कोर्सेज हो रहे हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन होती है। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म एक हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, और मूक्स प्लेटफॉर्म, स्वयं प्लेटफॉर्म को ग्लोबल प्लेटफॉर्म के साथ एक बहुत ही अच्छा एज मिल रहा है। और आने वाले समय में मैंने एक स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा था कि जो हमारा स्वयं प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बन जाएगा, और स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट होंगे। और थोड़े थोड़े क्रेडिट्स अर्न करने के बाद, अब किसी को फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं अपने घर में, किसी को कुछ फैमिली के इश्यूज हो जाते हैं, तो उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। बट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स एक ऐसा डिजिटल रिपोजिटरी सिस्टम है कि उसमें आपने जो भी पढ़ाई की वो 7 साल तक आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं, और 7 इयर्स तक आप उन क्रेडिट्स का यूज कर सकते हैं। आप उसको रीयूज नहीं कर सकते। अगर आपने एक जो भी क्रेडिट्स अर्न किए उसके बाद आपने एक डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ द क्रेडिट्स अर्नड आपने एक डिग्री ले ली, तो आप उसको रीयूज नहीं कर सकते। बट यस, ये सिस्टम आपको पूरा 7 साल तक पूरी इंफॉर्मेशन देगा। So academic credits can be used to have a degree, but they cannot be
redeemed once again. They can be redeemed once, they cannot be redeemed once again. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी अभी कि ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, किस तरीके से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो कॉलेज है चाहे वो यूनिवर्सिटी है, अब एक जो यूनिवर्सिटी ने गैजेट नोटिफिकेशन दिया है उसके बेसिस पे अब हर कॉलेज, हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी को बच्चों का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी क्रिएट करना, इट इज मैंडेटरी, राइट? सो what is the purpose of having an academic bank of credits? This is number one. The purpose of academic bank of credits is to facilitate the credit transferability and the recognition across different educational institutes. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने जीसस एंड मैरी कॉलेज की एक स्टूडेंट हूँ और मैंने एक प्रोग्राम बीकॉम में एडमिशन लिया है, बट मैं अपनी डिग्रीज में कुछ साइकोलॉजी के पेपर्स को ऐड करना चाह रही हूँ, कुछ साइंसेस के पेपर को ऐड करना चाह रही हूँ, कुछ क्रेडिट कोर्सेज को ऐड करना चाह रही हूँ, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ. सो आई कैन टेक पार्ट in the admission of a credit course from say any other university. Like for example, मुझे IIT, IIM का एक बहुत अच्छा कोर्स लग रहा है कि ये मेरे कोर्सेज को, मेरे नॉलेज को बढ़ाएगा, और ये क्रेडिट कोर्सेज भी हैं, नॉन क्रेडिट कोर्सेज भी हैं, नॉलेज कोर्सेज भी हैं. तो मैंने अपने क्रेडिट कोर्सेज में, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जीसस एंड मैरी कॉलेज, मैंने IIT के किसी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लिया. तो वो एडमिशन लेने के बाद जो मैंने क्रेडिट्स अर्न किए, उसको मैं अपने, जो मुझे ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी या जो मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, मैं अपने कॉलेज में जाकर दूंगी, और वो कॉलेज जो है उस चीज को वैलिडेट करेगा, वेरीफाई करेगा, और अगर वो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन हो जाती है तो वो मेरे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा कि एज ए स्टूडेंट आई हैव अर्न दीज नंबर ऑफ क्रेडिट्स, राइट? तो स्टूडेंट्स जो है सबसे पहले अपनी आईडी क्रिएट करेंगे, पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेंगे, अपने क्रेडिट्स को अक्यूमुलेट करेंगे, उसके बाद एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में अपने क्रेडिट्स को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने क्रेडिट्स अर्न किए, आपने क्रेडिट्स को मतलब ट्रांसफर किया, और आपने अपने क्रेडिट्स को लोगों तक पहुंचाया कि हम इतने सारे क्रेडिट्स हमारे पास हैं और हम इस थ्रेशहोल्ड लिमिट पे पहुंच गए हैं that we can earn a degree, a certificate or a diploma. Now the purpose of the academic bank of credit is to facilitate this transferability and the recognition of whatever credits you have earned across the educational institutes, right? So it works like a bank. आपके पास जो भी सेविंग होती है, जैसे आप अपने बैंक में जमा करते हैं और जब आपको विड्रॉ करने होते हैं आप विड्रॉ कर सकते हैं, उसी तरह से ये बैंक है जिसके अंदर आप एकेडमिक क्रेडिट्स को आपने अर्न किया, आपने एकेडमिक क्रेडिट्स को अपने इंस्टीट्यूशन में दिया, और अपने जो है उसका आपको क्रेडिट मिलेगा, और उसका आपको क्रेडिट जो है वो इस तरह से मिलेगा कि आप एक डिप्लोमा अर्न कर सकते हैं, आप अपना सर्टिफिकेट अर्न कर सकते हैं, और आप अपनी डिग्री भी अर्न कर सकते हैं. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, दैट इट अलाउज यू द ट्रांसफरेबिलिटी. एंड अब इसके अंदर सबसे एसेंस क्या है? सबसे पहला ये एसेंस है दैट इट इज अ वंडरफुल मूव बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर द स्टूडेंट हु इज परस्यूइंग द हायर एजुकेशन, allowing them to benefit from a grade or a score they receive for their individual degrees. So this effort provides a student with a wide range of graduation options. जैसे अभी किरण मैम ने आपको शुरू में बताया कि अब हमारे पास कोई स्पेशलाइजेशंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. बच्चा जब भी ग्रेजुएशन पूरा करेगा वो ग्रेजुएट कहलाएगा, वो कॉमर्स ग्रेजुएट या साइंस ग्रेजुएट नहीं कहलाएगा, बट आपका ऑप्शन उसमें भी है कि आप अपनी स्पेशलाइजेशन को कंटिन्यू भी कर सकते हैं. इट इज कंप्लीटली on the basis of choice, whatever degree you want to make. If you want to make partially science, partially commerce and partially arts, you can do that. So academic bank of credits जो है, इसके अंदर सबसे पहला स्टेप है कि यूनिवर्सिटी को या एकेडमिक इंस्टीट्यूट को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और स्टूडेंट्स को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. उसके बाद इनकी क्रॉस लिंकिंग होगी. मतलब आपका जो ABC का पोर्टल है उसके अंदर दो तरह के अकाउंट्स हैं, स्टूडेंट अकाउंट है और एक यूनिवर्सिटी अकाउंट है.
तो जब ये दोनों काम खुल जाएंगे, so there is a cross linking between the two, right? So how it works? The academic bank of credit is a system that allows the students to earn the credits, accumulate the credits, and transfer the academic credits across the different educational institutes, providing them with the increased flexibility and the opportunities in their educational journey. So how it works? देखिए, मैंने इसके अंदर आपको अगर जो पर्टिकुलर स्लाइड आप देख पा रहे हैं, इसमें क्रेडिट अर्निंग पहला स्टेप है, उसके बाद क्रेडिट अक्यूमुलेशन सेकंड है, क्रेडिट ट्रांसफर तीसरा है, फ्लेक्सिबिलिटी है, पर्सनलाइजेशन में आप जैसे मर्जी अपने कोर्सेज को ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, आप आपके पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, और जो भी आपने पहले लर्न किया या जो भी आपने आपकी लर्निंग्स है उसका ड्यू क्रेडिट्स आपको स्टूडेंट्स को मिल जाता है। तो ये हमारी ग्रोसरी है वर्ड्स की जो हम आगे यूज करेंगे। क्रेडिट अक्यूमुलेशन का मतलब है कि द फैसिलिटी क्रिएटेड बाय एबीसी ओपन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू ट्रांसफर दी कंसोलिडेटेड क्रेडिट्स अर्न्ड बाय देम। मतलब सबसे पहले आपको एबीसी आईडी खोलनी है, इसको हम बोलते हैं क्रेडिट अक्यूमुलेशन। उसके बाद क्रेडिट्स का रिकॉग्निशन होता है फ्रॉम वन इंस्टीट्यूट, इफ यू हैव डन सम कोर्स सो इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द अदर इंस्टीट्यूशन, तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट रिकॉग्निशन। तीसरा होता है कि क्रेडिट ट्रांसफर। अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपना पूरी एजुकेशन पूरी कर रही हूँ और मैंने मद्रास यूनिवर्सिटी से एक कोर्स किया, बट मेरा 50% ऑफ द क्रेडिट्स जो मैंने अर्न किए वो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किए। तो जिस यूनिवर्सिटी से भी आप 50% क्रेडिट्स अर्न कर रहे हो, उस यूनिवर्सिटी के पास ऑप्शन होता है कि वो डिग्री, डिप्लोमा या डिग्री वो बच्चों को वो देंगे। ठीक है, ये मैं पॉइंट रिपीट कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया एज अ स्टूडेंट। So after I take admission in Delhi University as a student, I want to do some courses, one from Mumbai University, maybe one course from Gujarat University, one from Chennai, wherever. So मैं कहीं से भी कोई भी accumulate कर सकती हूँ credits. तो credits earn करने के बाद, credits को accumulate करने के बाद, अब मैं अपने parent institute को वो credits को transfer करने का उनकी transcripts मैं दूंगी। अब उन ट्रांसक्रिप्ट्स की रिकॉग्निशन वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर कॉलेज पे डिपेंड करता है। तो मैं बच्चों को और फैकल्टी मेंबर्स को ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाह रही हूँ कि जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के ट्रांसफर ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भी हैं, आप उनको, और उसका डेटाबेस एबीसी के पोर्टल पे भी है। उन इंस्टीट्यूट से थोड़ी पार्टनरशिप में बात करिए, उन इंस्टीट्यूट से पता करिए कि कौन कौन से कोर्सेज बच्चों के लिए अच्छे हैं, कौन कौन से अपकमिंग कोर्सेज हैं which can help them in making employable, in making them good in terms of earning of the credit. So talk to them because there's a list which is given on the ABC portal, right? अच्छा, अब आपने क्रेडिट्स अक्यूमुलेट कर लिए, मतलब आपने अपनी एबीसी आईडी खोली, आपने अपने क्रेडिट्स का रिकॉग्निशन भी आपको मिल गया, आपके इंस्टीट्यूट ने रिकॉग्नाइज कर दिया कि ओके यू अर्न द क्रेडिट्स फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी और फ्रॉम एनी कोर्स व्हिच इज बीइंग स्टार्टेड बाय आईआईटी और एनी स्वयं कोर्स। there is a list of the courses which are actually approved by the government of India and under the ODL board, Open Development and Learning Board, that yes, free courses start. So you have to particularly choose those courses which are approved by the ODL, and only then your institute will be helping you in transferring of the credits from one university to another university. So it is very important now because admission is very close. So please appoint one nodal officer and his particular team, because this work cannot be delegated to only one person. One person can be a nodal officer of academic bank of credit work, but he should have a very dedicated team who will take care of the opening of the ABC, who will take care of the particular forms which they are coming up for the admission, that there has to be a column now in the new admission form of ABC ID of every student, right? So this facilitation at the academic institute level is now very, very important. So after opening of the credit, this ABC ID, the recognition of the credits, there will be a credit transfer.
see, this is again an important step, that whether the credits have to be transferred from one university to another university, it is the prerogative of that university that whether they recognize the credit transfer or not. आप किसी को force नहीं कर सकते कि आपको ये वाला कोर्स के credits transfer करने हैं कि नहीं करने हैं. So you can always take the approvals from your academic body, that is the academic council, the executive council, that this is how we are going to operate, and these are the institutions and these are the courses which we are going to recognize. And once it is done, the academic bank, the credits of the students what they have earned in the ABC account will be start reflecting, and you will be eligible to either earn a certificate or a diploma or a degree. So this is how it works. अब देखिए कि किसी भी सिस्टम को कि हम बोलते हैं कि ये सब स्टैंडर्ड है या क्वालिटी की बात करते हैं, तो वो पर्टिकुलर एबीसी का सिस्टम जो है उसकी क्वालिटी और इंटेग्रिटी बहुत जरूरी है देखना. तो हम ये जरूर देखेंगे कि उसका एक्रेडिटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है. That is the quality standards of that particular program. And you must see on the particular, before a student gets into any of the MOOCs courses of the SWAYAM, you must see the transfer policies, the accreditation policies. You must see that how you are going to receive the official transcripts, how it is going to be submitted. और अगर आपको कहीं पे कोई इशू आ रहा है कि आपके क्रेडिट्स मिसकैलकुलेट हुए हैं, because to err is human. And once we are into a transitioning phase of going into an academic bank of credit system, there could be some grievances of the students. There could be some issues with the students. So in that case, the students must give an appeal. There's an appeal process. There's a supporting process. So there is an enrollment in the coursework also. There is an enrollment of the tutorials also. There is an enrollment of the particular internships also, because academic bank of credits जो है वो जैसे IITs में अगर आपने internship की तो उसके भी credits देता है, tutorials के भी credit देता है, practical exams के भी, laboratory के भी credits देता है. So you have to have, because now there is a national document of credit framework which is available on the UGC website. I request each one of you to read that very, very carefully, because it's a new system. And we will have some frequent workshops which will give you a practical orientation of say one case study we can take in the next workshop. But yes, today I'm going to give you a complete overview of what the system is all about. A step-to-step guide also I will give you. So in this particular credit accumulation, the coursework also will have some credits. The exams, which is a proctored exam, मतलब आपके designated centers होंगे. और MOOCs के अगर किसी ने कोई courses नहीं किए, so I request all of you to get enrolled into some courses which are relevant to your particular course. Even the faculty members and the students both can join this particular course. This is going to give you a very hands-on experience about how the credits are transferred, how the credits are earned, how the credits are transferred, what particular things, the discussion forums, the tutorials, the laboratory work, the exams, how they are going to increase your, the credits, what you're earning. So this is what is called as the credit accumulation, right? So this internships, practical experience, etc. After you earn the credits and you're very close to the real world, you'll be able to earn the credits, and then the term comes of the transfer of the credits. So I told you that every organization, we call it as AI, because in the document, if you see of all the government documents, they have referred to the higher education institutes, not as colleges, not as universities, but as academic institute. So all the academic institutes will have their own particular policies of the transfer. So you have to see the course equivalence. You have to see the prerequisites of getting into that course. And you also have to see the vacancies which are there, because sometimes the course is filled. So you cannot go into that. So now there is a beauty of this academic board bank of credits, that number one, the choice is given of the courses. This is a very, very important thing which the University Grant Commission has initiated. That is the academic bank of credits.
wherein the choice is given of which course you can go into. This is number one choice. The second choice, which is the cherry on the top, is from which teacher you can do that. So that this system is evolving actually. So like we have the global standards, this academic bank of credits is also moving on the path of the global standards, wherein the students have a double choice. One, they can opt for the course. Number two, they also have the option to choose the particular teacher they want to, get themselves enrolled. Suppose there are 3 teachers who are teaching the economics paper, right, on the MOOCs Swayam platform. So they have the choice that they can get enrolled into, the reviews, because they will be having a reviews, they'll be having an open platform of, the reputation of a teacher also. So the teacher also gets recognized here. So you can do a hands-on project. So, the things are evolving and things are coming. So although everything is in place, but yes, at present, there is an ODL, that is the Open Development Teaching Learning, wherein on the remote basis, the institutions can start with their courses, but they have to get the approval of the ODL board and also of the University Grant Commission. Only then they will be eligible to start with the particular course. So there are some legal compliances, there are some implementation issues, there are some technical issues. So we all have to join hands together to understand this particular system, because this system is exactly like a global system. So there is an inter-transfer operability of moving from one university to another, using from one college to another. So I had a dream to be an IITian, so I can fulfill my dreams by getting into one course. So, I mean, as a university, you can formulate your own guidelines that how many particular courses you will allow the students to get themselves enrolled into MOOCs as far as their ABC account is concerned. So whatever they are earning after the end of each semester, there is a particular format of the ABC account wherein the data is built in a particular CSV file, and it has to be uploaded on the portal, and then it will start getting reflected on the academic bank ID of the student. So we will be, I'm going to give you step-to-step guide. So the credit evaluation, the transfer, and the capacity building and everything has to be in place, because the system is evolving and there is a continuous improvement, and every now and then the new amendments are coming in. So we have to very closely observe the system. So there are few benefits of this particular system. Number one, it is very flexible. Then it gives the students an opportunity of a lifelong learning, right? So lifelong learning is all about, it recognizes the skills and the knowledge and the attitude which is received in terms of the credits by a student. So the life of the credits earned by the student is 7 years, right? So there is definitely an improvement in the quality of the entire system, because once you start developing MOOCs, you have to see the experience of the teacher. Experienced teachers only get these kind of an assignments. Then there is a process of review, there is a process of editing, there is a process of putting visuals and making it more beautiful. And the whole learning experience of the MOOCs is in 4 quadrants. Like you have to have some videos, you have to have some text, you have to have some beautiful takeaways, and the important resources which are linked and associated with that particular subject. And of course, the self-evaluated questions. That is the in-text questions, followed by some quiz, followed by the discussion forums. So, there is also a hand-holding of the MOOCs by the interactive platform which the Swayam platform gives. But there is a very important news, which I'm going to share it with all of you, that most likely in July, there is a digital university which is coming up. So, definitely all the provisions which are right now for the ABC, they are going to be changed. They are going to be broadened.
the MOOCs platform will be implemented by the Open Digital University. And after the coming of that digital university in place, students will be very, very happy. Their learning systems will be, very, very flexible. And after they attain that threshold limit, they will be awarded straight away the degrees. So it eliminates that duplicacy of the work. So this is a very important slide, which is I'm trying to show you here. ABC is a national level credit-based, flexible, student-centric digital facility for the students to store their academic credits. It is definitely aligned with the new education policy 2020. The first is the earning of the credits, which is credit accumulation. Then once the student earns those credit, the higher education institutes are going to upload the earned credits on the APC student account, which is now a mandatory compliance from this particular academic session, which is going to start next month. And of course, there is a mechanism for transfer of credits. So try and make some good policies which are aligned with the NEP 2020 and see the good examples of those higher education institutions which have already adopted this beautiful system of academic bank of credits. So you must understand that 1 credit is equal to 1 hour of theory and or tutorial or 2 hours of laboratory work. So whatever online courses of Swayam or any approved institution, what you are helping your students to get themselves enrolled into, see this particular compliance is there. Otherwise, there will be a problem. So how the credits are going to be recognized, you have to see the university policies. Then, the academic bank of credit demonstrate a candidate's skills and the knowledge to many employers. So these credits may show an applicant dedication to the professional growth. And for example, a technology firm may favor an applicant who has an ABC credits for finishing a coding boot camp, right? So now, we are no more in the stereotype world. We are into a contemporary, dynamic, ever-changing world, which is giving us a very good platform where learning, continuous learning, sustained learning, upskilling, knowledge, skills, attitude, certification is on a self-paced mode. So self-paced mode is nothing else, none other than the MOOCs. So they are, the employers of today are giving due recognition to the new courses which are on the MOOCs platform. And, there is a new outlook towards it. There are some strategy building courses. There are some upskilling courses. There are courses which are moving on for the machine learning, for artificial intelligence, for the new paradigms which are cropping up, which are coming up. So we are just the enablers of implementation of the NEP 2020. So these are few examples. So after this, you can just have a look on this. Everything is linked through the National Academic Depository, that is the NAD. So these are a few more examples. I'm just skipping because of the shortage of time, because I want to show you a step-to-step help that how you're going to move forward with this. So there is a notification by the University Grant Commission about the academic bank of credits, so which may require the college students to register and get their IDs. Like we have a college ID, we have a ABC ID, right? So the academic bank of credit is commonly recognized or standardized. So therefore, its details and execution may vary by educational institutes or the states, because I told you that to implement the ABC, every organization, academic institutions will have their own policies. Although the credit framework document is in place, there is an equivalence of every damn policy what you're making. So you can refer to that document, make your policy, find out the equivalence and transfer the credits. Because ultimately we are the enablers. We are making each and every student happy. We are making each and every student skilled. So, we are giving a due recognition to their achievements.
So this is how the academic bank of credits notification will work. So these are the dates on which the notifications came, and the modifications of the notifications came on 28th of December 2021. So these are the two amendments which are there. So understand these documents very well. And there is a credit framework document, which is very, very important for all of you to understand and understand this very well. Now, there is a very important thing which I want to tell you here. Like after the creation of the account, which is very user friendly, everything is portal based, online based. अब कई स्टूडेंट्स के पास पैसा नहीं होता, सो आपको इसमें लोन की भी फैसिलिटी है कि स्टूडेंट्स एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से लोन ले सकते हैं, उसका रीपेमेंट का, इंस्टॉलमेंट्स का, हर चीज का एक प्रोविजन दिया हुआ है. And you have the eligibility requirement also, that who will get the loan. So this is very important for all of you to understand that you can give the facility of the loans. And after giving them the loan facilities, there is a credit accumulation, right? They will start studying और उनको लगेगा कि हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे पास बहुत ही important facility है of the bank creation of. Then you have also the facility of the career counseling, कि आपको पूरा वेबसाइट को कैसे यूज करना है, कैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स है. तो ये करियर अपॉर्चुनिटीज और करियर काउंसलिंग भी आपको एक आर्टिफिशियल एआई भी बताएगा, और आपके कुछ एनेबलर्स भी, एक टीम बन रही है वो भी आपको बताएगी. और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का भी एक टैब होगा, तो आप उसमें अपना क्वेश्चन टाइप करिए, आपको उसी टाइम आंसर मिल जाएगा. सो like we have in the global universities, everything is impersonal. Here also everything is impersonal, but we have supplemented this with a good team also. Now coming on to the benefits of the academic bank of credits. सबसे पहले है, the participation education institutes in ABC scheme will enable the students to build their degrees as per their choices. So this is very important कि academic bank of credits का पार्ट बनने के बाद आप अपनी डिग्री को खुद डिजाइन कर सकते हैं. दिस इज सच अ गुड एक्सपोजर फॉर द स्टूडेंट्स. लाइक आई वाज आल्सो अ कॉमर्स स्टूडेंट ऑलवेज, तो मेरे को बहुत मन था कि मैं म्यूजिक में, साइकोलॉजी में, एजुकेशन में कुछ नया सीखूं. सो नाउ आई हैव द चॉइस, इवन एट द एज, आई मीन बिकॉज देयर इज नो एज हियर इन लर्निंग, सो यू कैन गेट अपस्किल्ड योरसेल्फ एज अ टीचर ऑल्सो, अपस्किल्ड योरसेल्फ एज अ स्टूडेंट ऑल्सो, build your career and earn the degrees, diplomas and the certificates, right? So students can finish the course depending upon their needs. अब मेरे को एक साल ब्रेक लेकर फैमिली को सपोर्ट करना, I can do that. मुझे एक साल कोई काम नहीं करना, उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा क्रेडिट्स में एनरोल होकर अपनी डिग्रीज को बना सकती हूँ. So I can do that. So see the flexibility, see the important part that how easy it is now for the students to earn the credits here. So it's a flexible system, it's cost effective, it saves time, it is accessible, and affordable loans are given. So now I am just trying to show you the 3 important videos which are 1 to 2 minutes each, so that you understand, and they are official. And the links I have put incorporated in the PPT for your convenience, because you would like to refer it to in the future. So I'm just playing the first video. कम ऑन डूड, पैसे ही क्रेडिट होते हैं ना? नहीं यार, इसमें पैसे की जगह एकेडमिक स्कोर और क्रेडिट काउंट होता है. जस्ट अ मिनट, ये कैसा अकाउंट है? एबीसी. हाँ, एबीसी. अभी एबीसीडी क्या पढ़ने लगे? Grow up, man. We are in college. Yes, guys, we are in higher education now. हायर एजुकेशन में तो एबीसी की नीड और भी ज्यादा है.
और इसमें हमारी कई सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी छिपा है। मतलब कैसे? एबीसी मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, और इसमें जो अकाउंट हम बनाते हैं उसे कहते हैं एकेडमिक बैंक अकाउंट। और इस ऑनलाइन अकाउंट फैसिलिटी को स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूजीसी और एनईडी ने। पर फायदा क्या? फायदा ही फायदा गाइस। देखो, अगर तुम कोई कोर्स ऑनलाइन या किसी और यूनिवर्सिटी से करते हो और चाहते हो कि वहां अर्न करे हुए क्रेडिट्स तुम्हारे फाइनल रिजल्ट में शो हो जाए, यानी कि हमारे कॉलेज के फाइनल रिजल्ट में शो हो जाए, तो कैसा रहेगा? वाह, कमाल का आइडिया यार। लेकिन ये होगा कैसे? देख, जब भी तू किसी कोर्स में एनरोल करता है तो अपना एबीसी नंबर मेंशन कर दे। उसके बाद वहां तू जो भी क्रेडिट या स्कोर अर्न करेगा वो ऑटोमेटिकली तेरे एबीसी अकाउंट में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। यार काश मैं इसका फायदा उठा पाता हूँ। क्यों, क्या हुआ? यार मैं तो सेकेंड ईयर के बाद 1 साल का ब्रेक लेकर कुछ जॉब करना चाहता हूँ। डोंट वरी, एबीसी कैन हेल्प इन दैट टू। कैसे? पर फिर मेरी डिग्री का क्या होगा? मान ले तूने 2 साल पूरे कर लिए तो इक्विवेलेंट क्रेडिट के हिसाब से तुझे डिप्लोमा तो मिल ही जाएगा। उसके बाद 1 साल और तूने इसी कॉलेज से या किसी और कॉलेज से पूरा कर लिया तो तुझे डिग्री भी मिल जाएगी। और लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब तेरा एबीसी में अकाउंट हो। तो खुलवा दे यार हमारा भी अकाउंट। Don't ask me. Just go to ABC website www.abc.gov.in and open your account. Interface is very easy. So earn the credits from anywhere and enjoy the academic freedom. So I hope you were able to listen and hear the video. Yes, ma'am. Very nice. Okay. So you've seen that how easy it is to open the bank of accounts. So this is the second video which I'm going to show you here, because they are important and they're officially released by University Grant Commission and National Academic Depository to make a layman's for layman's so that they can understand the system of credits very well. So I'm just playing this video now. मम्मी, मम्मी, ये अकाउंट ओपन कर रही है। कौन? आप ही देखो, चलो। बताओ कौन सा बैंक? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ओह गॉट इट, एबीसी। तो इसके लिए हमें बैंक में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। उसके बेस पर आपको डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट्स मिलते जाएंगे। क्यों भाई, क्या जासूसी चल रही है मेरी बिटिया के कमरे में? पूरी की पूरी फैमिली यहाँ बैंक अकाउंट खोल रही है। ये बैंक अकाउंट? तो आप लोगों ने भी सुन लिया एबीसी के बारे में। एबीसी क्या है बेटा? आइए देखिए और सुनिए। अंकित, समझाओ जरा इनको। नमस्ते अंकल। यूजीसी ने कोर्स क्रेडिट जमा करने के लिए अब एक बैंक बना दिया है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस इसमें क्रेडिट ट्रांसफर करेंगे। हमें इसमें एक अकाउंट बनाना है बस। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे जैसे आपके क्रेडिट्स बढ़ते जाएंगे उसके बेस पर आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री मिलती जाएगी। एक्चुअली एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक नेशनल लेवल की फैसिलिटी है। ये एक डिजिटल डेटाबेस है जिसमें हर एक स्टूडेंट की एक यूनिक आईडी होगी और हर एक का एक डिजिटल अकाउंट होगा। यूनिक है एबीसी तो? ये तो सारे पेरेंट्स को पता होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट abc.gov.in पर लॉग ऑन करें। So I think this also video was very clear, and this is the Yes, last ma'am. video. This is the last video which I'm playing. It's a very small minutes videos, but they are very important. उसके बाद मैं आपको पूरा step to step guide बताऊंगी so that you all can start doing it. नेक्स्ट, बिल्कुल।
सॉफ्टी, समंदर, चिप्स, वड़ा पाव। या जूस पार्टी। नो नो गाइस, इट्स कैंटीन। Hey guys, wait. Next round. Drums, bongo, तबला, violin, guitar. Wait. Let me guess. It's a musical concert. No. Instrument की shop. से A, B, C. accelerator, brake. And... No guys, it's academic bank of credit. ठीक है। यूजीसी ने कोर्स क्रेडिट जमा करने के लिए एक बैंक बना दिया है। इसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस क्रेडिट ट्रांसफर करेंगे। हमें सिर्फ एक अकाउंट बनाना होगा बस। इसका क्या एडवांटेज होगा भाई? इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं भाई। जैसे जैसे आपके क्रेडिट्स बढ़ते जाएंगे उसके हिसाब से आपको डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स मिलते जाएंगे। ये एबीसी काम कैसे करेगा? सेम टू सेम बैंक जैसे। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक नेशनल लेवल की फैसिलिटी है। इसमें एक डिजिटल डेटाबेस होगा जिसमें हर एक स्टूडेंट की यूनिक आईडी होगी और उसका डिजिटल अकाउंट भी होगा। यानी ये क्रेडिट वेरिफिकेशन, क्रेडिट ट्रांसफर एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन, ये तीनों काम करेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन सभी इंस्टीट्यूट्स का इसमें रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसमें अकाउंट ओपन करने के लिए क्या करना होगा? अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट abc.gov.in पर लॉग ऑन करें। So now it is very important for all the participants to understand here that a student has to earn at least 50% of the credits from the higher education institute awarding the degree or the diploma or the certificate. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से 50% मतलब जो भी मेरे सपोज मैंने 120 क्रेडिट्स अर्न किए हैं तो 60 क्रेडिट्स मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से मिलेंगे। तो 60 वो मुझे 50% ऑफ द क्रेडिट्स दे रहा है यूनिवर्सिटी, वही मुझे डिग्री भी देगा। सो नाउ दिस इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम विच आई वुड लाइक टू शेयर हियर कि इसमें आपका एक क्वेश्चन होगा कि आजकल क्या है कि मूक्स का फैशन है तो बच्चे 50% में ना करके 20% कहीं से, 15% कहीं से ऐसे करके क्रेडिट्स अर्न कर रहे हैं। तो फिर इसमें अवॉर्डिंग अथॉरिटी क्या होगी? तो इस पर्टिकुलर सिस्टम का मैंने यूजीसी चेयरमैन का एक वीडियो देखा था। उन्होंने बताया कि हम डिजिटल यूनिवर्सिटी लॉन्च करते ही तो अगर इसका सिचुएशन आएगी the participants microphones on mute, it's creating a lot of noise. So basically अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि सभी लोग अलग अलग क्रेडिट्स अर्न कर रहे हैं तो उस केस में अवॉर्डिंग अथॉरिटी कौन होगी? उस केस में अवॉर्डिंग अथॉरिटी वो डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड द क्रेडिट्स व्हाट यू हैव अर्न्ड दे आर वैलिड फॉर 7 years. So this is very important to understand. अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एबीसी में कौन कौन रजिस्टर कर सकता है? यूनिवर्सिटीज, ऑटोनॉमस कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये सारे लोग एबीसी पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं। So you have to take the approval of the statutory authorities of your higher education institutions like academic council and executive council. And then you can ask your students to get themselves enrolled in small courses in addition to their regular admission. अब जैसे आपने अपने colleges में students को एक regular admission दिया, उसके अलावा आप उनको additionally बोल सकते हैं कि आप ये course में enroll हो जाओ स्वयं के and you can start earning the credits. So ये आपका प्रोसेस है जो आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले आपको www.abc.gov.in खोलना है। उसके बाद you have to upload the data of the students credits obtained again on www.abc.gov.in. You have to use the social media to create the awareness. अब हमारा रोल NEP इम्प्लीमेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका ये सबसे पहला इनिशिएटिव आपका M.D.S.D गर्ल्स कॉलेज और अदिति महाविद्यालय ने लिया है कि अब आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की अवेयरनेस का प्रोग्राम आपने ये करवाया और बहुत सारे लोगों को इससे काफी अवेयरनेस होगी। देन यू हैव टू नॉमिनेट अ पर्सन कॉल्ड अ नोडल ऑफिसर इन योर कॉलेज, मतलब जो उसकी पूरी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स आपकी होंगी और जितने भी नोडल ऑफिसर्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के साथ हैं वो एबीसी के मैनेजमेंट टीम के साथ कनेक्ट रहेंगे दैट कहाँ पे कोई भी ऑपरेशनल इश्यूज आते हैं, क्योंकि बहुत सारे जगह पे मैंने सुना था कि बहुत सारे ऑपरेशनल इश्यूज भी आ रहे हैं। सो दे आर ऑल सॉर्टेड एंड दे आर ऑल क्लियर्ड इफ यू गेट टीम अप विद द एबीसी पोर्टल पीपल ओनली।
और इसके बाद आपको अपने टीचर्स को कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कराना है कि ये सिस्टम कैसे वर्क करेगा, राइट? सो इंस्टीट्यूशंस विल हैव देयर ओन आईडीज, students will have their own IDs, and they will work together to log on to this. So this is, you can see this particular slide, that how the student registration and the credit transfer takes place. सबसे पहला है registration. Students they have to get registered with their mobile numbers, और उसके बाद वो डिजी लॉकर के थ्रू ऑपरेट होगा ये सारा. आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा और डबल ओटीपी आएगा, 2 स्टेप वेरिफिकेशन होगी और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा. उसके बाद आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके अपना डैशबोर्ड एक्सेस कर पाएंगे और आपके जो एबीसी आईडी है वो आपकी डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट होगी. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू. सो द फर्स्ट स्टेप इज योर रजिस्ट्रेशन, द सेकंड इज योर लॉगिन आईडी, and then you have to move on to the transfer initiation, that whatever the credits the students has earned, they get transferred and they get reflected in their ABC account. So you have to request for a status. अब क्या है कि कई बारी बहुत देर से रिफ्लेक्ट होता है, so you can put a query and raise a query that I have earned these credits and I'm not able to see my particular credit. So this is how the credit system will work. So the academic institutions, they check the eligibility of the transfer, they see their own policies, they approve the credit transfer or not, and eventually when they are approving, the credits will be transferred. So ये आप देखेंगे कि वर्ड टू वर्ड मैंने आपका स्टेप टू स्टेप गाइड पूरे स्क्रीनशॉट्स लेकर मैंने इसमें आपको दी है, that this is how it looks like. So now you have to establish the eligibility, ये मैंने आपको भी बताया. So now I'm coming to the step to step procedure here. देखिए, जब आपने अपने पोर्टल पे एबीसी पे लॉगिन किया, सो इसमें आपका अकाउंट खुल गया आपके डिजी लॉकर के थ्रू, और आपके पास एक ओटीपी आएगा, उससे आपका अकाउंट खुल गया. सो दिस हेल्प्स दी स्टूडेंट्स टू एनेबल द मोबिलिटी. एंड आपकी जब मोबिलिटी खुल गई तो आपका डिजी लॉकर में आपने लॉगिन किया, और लॉगिन करने के बाद आपका ये 12 डिजिट एबीसी आईडी क्रिएट हो जाता है. So you have to go to the dashboard and see this is a 12 numeric ABC account which is created, right? So this is how the student will see. और अब उसका अकाउंट खुल गया, तो अभी आप देख पा रहे हैं on the screens that he has earned 0 credits here, but this is a 12-digit ABC ID which has already been created. ठीक है. अब उस बच्चे ने ये जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी और इग्नू से अलग अलग कोर्सेज किए हैं, तो इस तरह से वो उसकी स्क्रीन आपको दिखेगी कि दिस इज हाउ द क्रेडिट्स ही हैज अर्न्ड. सो नाउ ही विल आस्क हिज यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर ही हैज अर्न्ड 50% ऑफ द क्रेडिट्स टू ट्रांसफर द क्रेडिट्स. तो बच्चे की जो रिक्वेस्ट होगी इस आईडी पे होगी, ही हैज टू गो टू द पोर्टल. इफ आई रिक्वेस्ट मनिंदर कौर टू प्लीज पुट योर माइक्रोफोन ऑन म्यूट. सो दिस इज हाउ द स्टूडेंट विल रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट करने के बाद उसकी आईडी पे उसके पोर्टल पे चला जाएगा और ऑटोमेटिकली जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो आपकी आ जाएगी. अब मैं आपको एक लास्ट वीडियो इसमें दिखा रही हूँ, ये जरा वीडियो देखेंगे आप. दिस इज अ वेरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो. University Grants Commission, via its Gazette notification, notified the regulation of Academic Bank of Credits in Higher Education. ABC, with DigiLocker, stores all academic credits earned by students from various higher education institutions. To register, students can log on to www.abc.gov.in. Create a unique ABC login ID through DigiLocker using mobile or Aadhaar number. Enter security PIN, log into student account and add personal information to authorize the account. Access ABC dashboard which displays the student's ABC ID.
Select the credits of choice. Initiate transfer by selecting the beneficiary academic institutions. Provide additional details to complete the credits transfer. Check the credits transfer request status and get notified of the credits transfer using their exclusive ABC account. With ABC, get the academic flexibility, acquire the proper foundations, and achieve your ambitions. Further, National Academic Depository Platform, in collaboration with DigiLocker, is a 24/7 online storehouse for all academic awards. These are uploaded by academic institutions to prevent forgery and allow authentic data. Academic institutions can log on to www.ned.gov.in. Sign up with DigiLocker. Enter mobile number to get OTP. Enter OTP and set a security PIN and sign in. Access AI dashboard and select records section. Click on download CSV, select record type and click on download a sample CSV file. Prepare student data as per the CSV format. Compress the .csv file in .zip format. Click upload records of desired department, course type, degree name, area of specialization, year of examination, and record type. Select the desired record and click on verify CSV records. Upload the record files and click on submit. Check the upload status to access latest uploaded activity. When academic institutions submit student data to NAD, students can register to view and pull their academic awards to their individual DigiLocker account. Now, no more worries about misplacing your documents. With NAD, carry your awards and certificates on your fingertips. So we have seen here how the things move in the academic bank of credits. So there is a horizontal mobility across the higher education institutes. There's a freedom of choice. The students can enroll in the higher education institutions of their own interest, like IIT Bombay, IIM, and then Delhi University, Haryana University, any university of your own choice, you can do that. And you can tailor-made your degrees and do some modifications as per your interest. Then there's a multiple entry and multiple exit. आप ये देखिए कि आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, कोई भी कोर्स एनरोल कर सकते हैं और अपनी डिग्री खुद बना सकते हैं. So this is the beauty of ABC. So as of now, Swayam platform, NPTEL and VLab are the approved portals wherein you can start accumulating your credits. So from July 2023, the National Digital University is coming up. And this will facilitate the students to continue their education and accumulate the credits and opt for any degree, diploma, or certificates. So it will not be mandatory as the condition is of now that you have to do a particular degree and the 50% of the credits has to be from one university to be given the degree. If you, you will be free to take any credits, 12, 6, and have a variety of credit systems of the entire India, and the National Digital University will give you a particular degree. So this is what is going to happen. So this is a website. Log on to www.abc.gov.in. The second point is that you will have this kind of a portal wherein there is on the right hand side, if you see, there is a My Account type. So there are two types of account. One is a student account and the other is a university account. So if you're a student, click on the student. If you are a university, click on the university. So the next is Meri Pehchan National Single Sign-in page will emerge. So put in your mobile number. You will get an OTP. Enter that OTP. Click on I consent to Meri Pehchan and then sign in. After signing, this particular screen will come wherein you can log in as an academic institution and you can get yourself registered, because this is the first step. In the ABC portal, the first thing you have to do is you have to get yourself registered.
of all AI academic institutions. So the academic institutions have to get themselves registered and they have to join the National Academic Depository and you have to log in with M.D.S.D. And I've already shown you, I'm going back here, that there are two types of account. This is the website. First you have to open, and this is how the next screen will emerge. On the right hand side, there is my account. There are two types of account, student and university. And after you click on this, there is a mobile PIN and you get yourself signed in through M.D.S.D, that is the National Single Sign-In. So after this, you have to go to a sign-in. So this is the Academic Bank of Credit platform. HEIs and students can open their account, and all the three screenshots I have put in here. The 12-digit ABC, that ID is created. And definitely this is the particular data as of now. But the data, what is the figure of the students who have to get onto a ABC portal? It is between 4 crores to 5 crore students. And as of now, just see the data, it is very, very minimal, and we all have to join hands together to make it a reality and to implement the new education policy 2020 in line with this. This is the latest statistics. 92.65 lakhs total ABC IDs have already been created, and the total number of academic institutions which have enrolled under the ABC is 1246, and just a small number they are able to upload the credits of the student as of now, which is only 267. So this is the call for action for higher education institutes. We have to work hard to cover more students, which is more than 4 crores in the ambit of ABC portal. And from this academic session, it is important to create ABC ID for all new students who are taking admission in the academic session 2023-2024. You have to use the social media account to spread the awareness, as the University Grant Commission has given the 4 videos for which I have already put the link, which will be shared to all the participants. So you can have a look at that. So the capacity programs, the teacher training, how they can do it, you have to put together. So this is the flow of ABC here for the academic institutions. So first the ABC ID is created, then all captures of ABC IDs of all the students. Then you have to make and prepare the mark sheets of all the students in a CSV file. और मैं आपको ये बता दूं, ये सारे के सारे पोर्टल पे आपके हेल्पलाइन PDFs दिए हुए हैं ऑन द पोर्टल इटसेल्फ. तो कैसे मार्कशीट का अपलोडिंग होनी है, कैसे आपको CSV फाइल बनानी है, इसके छोटे छोटे वीडियोस भी हैं, छोटे छोटे हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं. और पूरा जब आपका हो जाता है फाइनली, तो आपका एकेडमिक बैंक ऑफ रिपोजिटरी में स्टूडेंट अकाउंट ओपन होता है और स्टूडेंट्स अपने क्रेडिट्स को अर्न कर सकते हैं. अब स्टूडेंट्स जो है वो 4 तरीके से अपनी आईडी खोल सकता है. एक डिजी लॉकर के थ्रू, एक AI पोर्टल के थ्रू जिसको हम उमंग पॉइंट भी बोलते हैं, और एक ABC पोर्टल के थ्रू. सारे पॉइंट्स मैंने पॉइंट टू पॉइंट, सिंगल पॉइंट टू पॉइंट मैंने यहाँ पे किए हैं. अब अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी अमेंडमेंट में आया कि सारे कॉलेज लेवल पे भी बल्क ABC IDs ओपन हो सकते हैं. और बल्क ID ओपन करने के भी कैसे आपका इसको ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं वेबसाइट पे, सो जस्ट रेफर टू दैट ट्यूटोरियल. दूसरा असिस्टेड मोड में है VIP के थ्रू, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, दिस इज इन अ इवॉल्विंग स्टेज. नाउ कमिंग ऑन टू द स्टूडेंट ABC ID क्रिएशन फ्लो. दिस इज हाउ इट इज क्रिएटेड. पहले आपकी ABC ID क्रिएट होगी, आपको स्टूडेंट की एजुकेशन कैटेगरी में जाना पड़ेगा. उसके बाद ABC का क्रिएशन होगा, आपको इंस्टीट्यूट क्रिएट करना है और आपका ID जो कार्ड है, इस तरह से ID कार्ड आपका दिखेगा. सो ABC ID कार्ड आपका ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, विच विल हैव अ 12-digit ID ऑन द पर्टिकुलर दिस थिंग पोर्टल, राइट. सो आपका पोर्टल बेस्ड ID कार्ड आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट. सो उसके बाद है आपका कि एजुकेशन एंड लर्निंग का आप ऊपर देख रहे हैं digilocker.gov.in, आपका डैशबोर्ड है स्टूडेंट्स का. So you have to go on to this particular point, that is academic bank of credit, right? So this is how it will work, Aadhaar card and OTP based, and this is how the institution will move on. If you see on the left hand side top corner, ABC ID card is already generated.
राइट? तो आपको भी इस तरह से आपको सारे ID कार्ड जनरेट करने हैं। और अगर आपको वो इशूड कार्ड में नहीं दिख रहा है तो आपको सर्च डॉक्यूमेंट में देखना पड़ेगा, कि आप सर्च करेंगे तो आपको आपका ID कार्ड दिख जाएगा। ये आपका ID कार्ड मैंने ऐसे ही रैंडम यहाँ से लिया है। उसका नाम है बच्चे का, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, और उसका जेंडर है कि मेल है कि फीमेल है, एंड इंस्टीट्यूशन टाइप आपको फॉरवर्ड करनी है। एंड दिस इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर, मैंने आपके स्क्रीनशॉट में लिया है। यू सी दिस, द ABC ID card is already there. And this is how the credit card, this is how the credit card of ABC ID will look like. So आपका थोड़ा सा पोर्शन रह गया, ये मैं आपको आगे बता रही हूँ। आपके हर पॉइंट का स्क्रीनशॉट बिल्कुल सीक्वेंस में है। So this is how the ABC ID creation, ABC portal will look like. The students have to go to the dashboard and they can download their ABC ID card here. And this is how he will see that अभी उसका 0 क्रेडिट है, क्योंकि अभी अभी आई कार्ड क्रिएट हुआ है। तो जो भी आपका ABC खुद भी क्रिएट कर सकता है, यूनिवर्सिटी भी क्रिएट कर सकती है, कॉलेज भी कर सकता है, और उमंग पॉइंट से भी आप कर सकते हैं। सो देयर आर मेनी वेज which are actually helping the students to create their ABC account. So this is the uploading process. इसके बाद जो भी academics आपके क्रेडिट्स अर्न किए हैं उसका अपलोडिंग होगा, और अपलोडिंग का ट्यूटोरियल है CSV फाइल में कैसे अपलोडिंग करनी है, और ये सारा आपकी मेरी पहचान के थ्रू आपको लॉग इन करना है, एंड यूनिवर्सिटी को भी पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, एंड देन इवेंचुअली द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सी व्हाट दे वांट. They will be able to see how much credits they have earned. So this is a very, very important step of uploading on the repository, digital repository of the portal. So each and you can see this guideline to fill the student data. अब students की marksheet और student का data कैसे बनाना है, ये भी DigiLocker पे samples भी दिए हुए हैं, videos भी दिए हुए हैं. सो आई थिंक कॉलेज लेवल पे इंटरनल इन्हीं स्टेप्स को देखकर आपको वर्कशॉप्स करानी चाहिए। आपको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, और उनको पूरा इस सिस्टम से फेमिलियर कराना, बिकॉज इट्स अ न्यू सिस्टम, कि कैसे कौन क्या काम करेगा, कौन CSV फाइल को बनाएगा, कैसे डेटा बनाएगा। अब जब डेटा बन जाता है, जब अपलोडिंग हो जाती है, उसके बाद वेरिफिकेशन और वैलिडेशन होती है। सो दिस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन क्रेडिट टेम्पलेट्स एंड गाइडलाइंस आर ऑलरेडी हियर. So you can see on the left hand side on the ABC portal, that is abc.gov.in, in the resources tab, you will have on the left hand side the user manual, the video tutorials, and how to fetch the data from the DigiLocker. So all the 3 points are mentioned here. So you can start uploading, get the verification done, get the credit scores done. अब आप देख सकते हैं जो बच्चे का हमने ID बनाया था, अब उसके इस टाइम पे 70 क्रेडिट्स अपलोडेड हैं। दैट इज फ्रॉम द वेरियस इंस्टीट्यूट्स, ही हैज अर्न्ड द क्रेडिट्स एंड नाउ दे आर अपलोडेड ऑन द वेबसाइट. सो दिस इज हाउ द bulk ID creation takes place. This is how the data uploading takes place, and eventually the students will earn their credits, and they will they will be happy that now they are eligible to earn the degree, diplomas and the degrees. एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर आपने वो डिग्रीज जो आपने क्रेडिट्स को अर्न किया है एज ए स्टूडेंट, सो वो एक ही बार यूज हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक डिग्री के लिए एक क्रेडिट्स को अर्न कर लिया, वही वाले सेम क्रेडिट्स आप दूसरी डिग्री के लिए नहीं कर सकते। एक बार आपने जो क्रेडिट्स यूज कर लिए, रिडीम कर लिए टू अर्न वन सर्टिफिकेट, आप दूसरे सर्टिफिकेट के लिए नहीं कर सकते। बट यस, देयर इज अ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। आपने एक बार सर्टिफिकेट अर्न किया, यू कैन ऐड द क्रेडिट्स टू अर्न अ डिप्लोमा, you can earn the credits to earn a degree in the same portal, but not for another certificate, not for another diploma, and not for another degree. So this was all from my side, and I'm sure आपको थोड़ा सा enlightenment जरूर हुआ होगा about the system. I understand the system is new, so point to point आपको हर particular point की workshop internally capacity building students and teachers की करनी है, so that they understand the system very well. Put the videos on the website of the college, so that once the workshop is done, the teachers can always see the videos again and again to see each step very meticulously and do
and make the CSV file, इसमें सारी beauty CSV file की है कि वो उसका डेटा बनाना बहुत मुश्किल होता है थोड़ा, क्योंकि validations, verifications, equivalence, ये सारी चीजें बहुत जरूरी चेक होंगी. So I request all of you to understand the credit framework system very well, understand the nuances of ABC credit. It's a beautiful system, it's a competitive system, and it is going to make your university a global competitive university. And we are aligned with the global system because of the introduction of this system. So my all salutations to Government of India, University Grant Commission for putting this system in place and making India a class university. So thank you so much for calling me here. So I'll be sharing the information entirely with you, which is having embedding all the videos released by the university. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Namita. Very wonderful, very informative. New to all of us. I know I can see the faces which are open, that you know it is going to be tough. No, it is not going to be tough. Let me tell you, it is so user-friendly that all of you will be able to do it. And definitely when the system comes, the transitioning is little difficult, but we are all together in this journey. So, you know, yeah, you can take the help, all the enablers who are actually into it. Together we will be able to a digital India. Completely. There can be some questions. I hope Anuradha or Nishu Bansal will take up. Yeah, please. Anytime. हमारी आवाज आ रही है? Thank you so much, ma'am. The chat box is full of the salutations. Wonderful session and exceptionally wonderful session, ma'am. We have learned a lot in 1 hour session, almost 1.5 hour session, ma'am. Everything is so clear, and my house is open for all the participants. If they want to ask questions directly to ma'am, they can unmute themselves, but kindly don't unmute yourself if there is some disturbance at your backside. So kindly put your questions in the chat box or ask to ma'am directly. हमारी आवाज आ रही है? Hello, good evening, ma'am. Good evening. Thank you so much for such an elaborative lecture on ABC, ma'am. We were really confused over this, but your session has cleared our doubts. At least now we are confident enough to go for it. Secondly, what I want to ask is that while you were, it is exclusively for the students only, or teachers can also have the academic bank of credits, ma'am? Yeah, anyone can have a bank of credits. Academic bank of credits is for everyone, and there's no age of learning. Okay, ma'am. So for that purpose, because our institution has yesterday or day before yesterday, they had ordered us all to register in M.D.S.D. So is this the initiation? Yes, it is mandatory. It is mandatory. I even put in my slides also that you have to go in through M.D.S.D, which is a national level login, which is mandatory for the compliance of ABC implementation. Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you. हमारी आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, आ रही है सर. सोनू जी, आ रही है. आपका नाम मैं पढ़ पा रही हूँ. पहले तो प्रिंसिपल मैम को, किरण दीदी को और आपको मैम बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतना सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि आपने हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में आपने समझाया और इतने अच्छे से, और वो भी सभी लोगों से ये जुड़ा हुआ चीज है. और ऑलरेडी भाषा का यूज किया कि मैं ज्यादा लोगों को रिलेट कर पाऊँ. जी, मैं पटना बिहार से जुड़ा हुआ हूँ और हिंदी पत्रकारिता जनसंचार का विद्यार्थी रहा हूँ. इसी वर्ष मैं उत्तीर्ण हुआ हूँ. किरण मैम को तो मैं इसलिए धन्यवाद दूंगा, लगातार सेशन करवा रही हैं इतने अच्छे अच्छे विषय के साथ. और आज नमिता दीदी से भी आज एक मुलाकात करवाई, इतना अच्छा लगा, इतने अच्छा सेशन को आपने जानकारी दी. मैं उस यूट्यूब लिंक को मैंने अभी जस्ट साझा किया है सभी ग्रुप में, क्योंकि इतनी अच्छी जानकारी जो लोगों से जुड़ा हुआ है, स्टूडेंट लाइफ से जुड़ा हुआ चीज है जो जानना चाहिए. उस मैम आपने कोई सवाल नहीं बना मेरे मन में, जो आपने बताया बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने हिंदी भाषा में ही, आप हिंदी लैंग्वेज में इतने अच्छे से
सारी बातों को समझा रही थी, मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा था। धन्यवाद। और कोई प्रश्न है किसी के तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक जस्ट सोनू जी, ये सेमिनार जो है मेरे साथ ममता जी भी हैं, अदिति महाविद्यालय दिल्ली से। हम दोनों का ये संयुक्त तत्वाधान से ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और हम दोनों धन्यवादी हैं नमिता जी। जी 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 जी, मैं क्षमा प्रार्थी, मैंने मैं हमसे भूल हुई है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ममता मैम का चेहरा नहीं था सामने, तो इसलिए मैं भूल चुक हो गई। बट मैम का भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि मैम के द्वारा भी मुझे कई बार लिंक मिला है समूह में, तो जानकारी तो हो जाती है। बहुत अच्छा लगा मैम, और मैं क्या बोलूं, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। मैम ने इतनी अच्छी जानकारी दिया, आप लगातार इतने अच्छे कोरोना काल से सेशन करवा रही हैं, जहां ऑफलाइन कार्यक्रम हो रहे हैं वहां आप ऑनलाइन आज भी लेकर इसे जारी कर रखी हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो हम जैसे दूर जो बिहार में बैठे लोग हैं, जो नहीं जुड़ सकते थे स्टूडेंट, उनके लिए नया अवसर है। ये कोरोना काल ने हम लोग को नया ऑप्शन दे दिया, गूगल मीट, जूम, और इस तरह से आप कार्यक्रम करवाते रहिए लगातार, हम लोग जुड़ते रहेंगे, एक छात्र के रूप में, ना कि एक पत्रकार के रूप में। धन्यवाद। मेरी रिक्वेस्ट है दोनों प्रिंसिपल्स के साथ, आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर ऑर्गेनाइजर्स उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दें, तो किसी की कोई भी प्रॉब्लम होगी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से लेकर या उसकी इम्प्लीमेंटेशन से लेकर, तो हम उसकी जानकारी को वहीं पे सॉर्ट कर सकते हैं, और प्लस आगे आने वाले वेबिनार सेमिनार्स की जानकारी इन पार्टिसिपेंट्स को दे सकते हैं। तो अब एक व्हाट्सएप ग्रुप आप बना दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। Okay, ma'am. I'll just create and send the link here. आप किरण मैम से परमिशन ले लीजिए, मैम से भी ले लीजिए, and then Professor Archana wants to ask something, ma'am. She is yes. Professor Archana, please ask your question. Good evening, ma'am. I'm sorry for my bad throat. And respected Anvada ma'am, Mamta ma'am, and good to see you, Namita ma'am, after a long time. It's not my query. It's a request that while implementing this ABC, we will be needing your guidance to orient the students in our college too. Sure. Anytime, I'm available. Yeah, theoretically, you have approached us about the entire factual details, how we have to go about it. But while we have to really guide the there student. is a step-to-step guide. Yes, these are the ma'am. different steps that you have to follow. I try to incorporate each and every screenshot of each step for the colleges, for the students differently in the PPT. So kindly follow that, and in case you want my session or whatever, I will help you in the practical orientation also of the same. Okay, my second query is, ma'am, those who got admitted last year, 22-23 batch, how about them? Like they will be automatically admitted to this DigiLocker? Because this is going to start from this session, you said? मैंने actually 2-3 sessions UGC, I'm a member UGC, so I went there for these kind of sessions. So there are something which are evolving, क्योंकि ABC ID तो हमें सभी को create कर ही लेनी चाहिए, और अब जितने भी फॉर्म्स हैं, क्योंकि अभी इसके ऊपर डिसीजन नहीं आया है कि इन बच्चों के ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, बट अब जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए तो 100% एप्लीकेबल है। तो फॉर्म्स में भी, एडमिशन फॉर्म्स में भी आप उसका कॉलम बना दीजिए कि बच्चों की ABC ID का ये कॉलम रहेगा, जो कि पहले नहीं होता था हमारा। और इन बच्चों के लिए मैं तो अभी सभी को बोलूंगी कि सभी अपनी ABC ID तो बना लीजिए। अब जैसे मैं उस दिन किसी स्वयं के कोर्स में मैं एनरोल होना चाह रही थी, तो वो स्पेसिफिकली आपसे पूछता है, डू यू वांट credits to be credited to the your ABC account? I said yes. तो मेरा ऑटोमेटिकली ABC अकाउंट खुल गया और मैं उसमें अपने क्रेडिट्स जोड़ने शुरू कर दिया मैंने। तो हो सकता है मैं अपने मास्टर्स की डिग्री या मैं कोई एक और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट करना चाहूँ, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ABC ID जरूर खोल लीजिए। आगे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जो भी हमारी प्रायरी मतलब पीछे की लर्निंग है उसको वैलिडेशन देता है, तो आप जरूर करिए। और बच्चों की जो रिजल्ट्स हैं उन्होंने अर्न किए हैं, आप इसके अंदर उसको
बहुत जल्दी आने वाला है कि ये एप्लीकेबल होगा। यदि हम एक सिस्टम के लिए प्रिपेयर्ड हैं, अच्छा है। ये नया सिस्टम है और अभी कुछ मैं आपको और जानकारी शेयर करना चाह रही हूँ। ये जो नेशनल ये जो डिजिटल यूनिवर्सिटी खुल रही है, इसके आने के बाद टीचर्स के पास भी बहुत सारे एवेन्यू होंगे, बच्चों के पास भी बहुत सारे एवेन्यू होंगे। जो चीज मार्केट में डिमांड में है करियर को लेकर, आप उस करियर से रिलेटेड अपना कोर्स चूज करके आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं अपने आप घर में बैठे हुए। तो ये एबीसी आपका अकाउंट खुला होगा और पुराने कुछ क्रेडिट्स अर्न किए हैं आपको, तो आप ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी, क्योंकि 2 या 3 महीने में ये लॉन्च हो रही है यूनिवर्सिटी, नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी। और कहीं कहीं से चाहे आपने 10 जगह से आपने क्रेडिट्स अर्न किए हैं, तो अब आपको जो डिग्री कौन देगा, अब आपको डिग्री देगा नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी। ये बहुत क्लियर गाइडलाइंस मतलब मेरे को पता है, यूजीसी चेयरमैन की स्टेटमेंट में भी मैंने सुना ये कि अगर कहीं से 50% आपने, जैसे आपने डीयू से 50% क्रेडिट्स अर्न किए हैं तो डीयू देगा। बट अगर आपका 50% का प्रावधान नहीं बन रहा कि आपने 10% कहीं से लिए, 12 कहीं से लिए, 16 कहीं से लिए, तो उस केस में National Digital University will issue a degree to the student. So this is going to be amazing. This is going to be a global, competitive lines, on the lines of the global competition. हमारी जो भारत देश है वो पूरा डिजिटल इंडिया की तरफ मूव कर चुका है, अग्रसर है। तो मैं सभी बच्चों को, टीचर्स को, सभी को बोलूंगी आप अपना एबीसी अकाउंट तो खोल लीजिए। ये आउटकम जरूर है कि आपको सभी को अपना एबीसी अकाउंट खोलना चाहिए। अपनी लर्निंग्स को क्रेडिट्स के फॉर्म में चेंज करिए, देखिए कि आपने क्या अर्न किया है, क्या सीखा है। और जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन में करें। अब जैसे एक फॉर एग्जांपल मनोविज्ञान का एक विषय है, साइकोलॉजी का विषय है, तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ साइकोलॉजी के इश्यूज में ही रहे, वो थोड़ा फोरेंसिक साइंस को भी इसमें डाल सकता है, क्योंकि बच्चे कई छोटी एज में मर्डर करते हैं, तो उस चीज को कैसे हमें टैकल करना है। कोई मर्डर हो गया तो उन चीजों को कैसे हमें अपनी नॉलेज बढ़ानी है। तो आप थोड़ा सा बातचीत करिए, थोड़ी सी डिस्कशंस करवाइए, थोड़ा सा बच्चों का होराइजन ओपन कराइए। और एक मैं जरूर सेशन और लेना चाहूंगी उसके ऊपर, न्यू टीचिंग एंड असेसमेंट पेडागोजीज, कि बच्चों को जज करना, बच्चों को नए तरीके से असेस करना, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है। हम बच्चों को एक थिंकर बनाना चाहते हैं। हम एक बच्चों को रट्टाफिकेशन वाली, जो हम रट्टा मारते थे, जाके लिख देते थे, इसके ऊपर हमें से नो करना है। से नो टू रोट लर्निंग, क्योंकि रोट लर्निंग आपको किसी रोड पे नहीं लेके जाती है। रोट लर्निंग आपको एक चौराहे पे खड़ा कर देती है। तो अगर आपको एक दिशा चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए, तो आपको नई एजुकेशन टीचिंग पेडागोजीज के साथ मैं अवगत कराऊंगी कि किस किस तरीके से आप बच्चों को क्लास में आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को खोल सकते हैं, ताकि बच्चा नए तरीके से सोचे, करे, एंटरप्रेन्योरशिप उसके अंदर आए, उसके आइडियाज डिफरेंट हो लोगों से, और वो एक क्राउड में भी शाइन करे। ही शुड बी द फेस ऑफ द क्राउड, नॉट द क्राउड। दैट इज माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू। सो टेक दिस सिस्टम होल हार्टेडली, अडॉप्ट दिस सिस्टम। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है सिस्टम, थोड़ा सा टेक्निकल है। तो अगर हम इस मतलब बच्चों, टीचर्स को कैपेसिटी बिल्डिंग कराएंगे, उनको सिखाएंगे, उनको बताएंगे, तो इस सिस्टम को हम बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Any other question? I'm open to that. I have last 10 minutes with me. I have another session. Thank you, ma'am. Ma'am, you have just in your one of the last few slides you have discussed there are 5 different methods for going for process. 4 different processes. So, ma'am, one was the bulk institution, bulk creation. Yes. Bulk creation for the institution. Yes. The process is same, that we have to go to My Pehchan. And yes, the process remains. What will be for the institution? Suppose the institution which admits the student, because ma'am, the whole universities have this nad.government.in. They have already installed this. Our professional university has done it. So our students who are doing this thing is presently they are students of our university. They are already their record is in nad.government.in. Yes. But
course, for the first year students, we are supposed to go for this credit part because they will be the first batch who will through this policy. Yes. Right. So if and you said there are two different points where I was confused. One was the bulk creation by the college. I want to know a bit more about it. Second, if the university is late, how the cross-linking will be between the institution, how the validation of the students' credit will be. मैम ये जो बल्क क्रिएशन वाला है इसके अंदर थोड़ा सा टेक्निकल वर्क इन्वॉल्व है. आपको NAD और ABC के पोर्टल पे देर आर हेल्पलाइन नंबर्स, तो यू हैव टू बी इन टच विद देम. वो आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे और उसके जो ट्यूटोरियल्स हैं मैं चाहती हूँ कि आप अपने जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स कॉलेज में कर उन ट्यूटोरियल्स के ऊपर अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कराइए टीचर्स की कि ये डेटा बनाने का होता है, वो डेटा अपलोड होता है, ऑटोमेटिक वैलिडेशन होता है. अब कई बच्चे अपने आप अपनी ABC ID बना चुके हैं या NAD की वो जो आप बता रहे हैं मेरी पहचान वाला बना चुके हैं, तो वो कॉलेज में सबमिट कर दे. तो और उसके बाद एक पूरा आपको कम से कम 10 लोगों की टीम 10 से भी ज्यादा बनानी पड़ेगी जो डेटा को कॉलेज वाइज क्लास वाइज प्रॉपर बनाए. CSV फाइल्स बननी होती हैं और उसके बाद वो फाइल अपलोड होती है. इसके अंदर प्रॉपर प्रोसीजर है. सो दिस इज व्हाट देयर इज अ ऑन द ABC पोर्टल देयर इज अ टैब कॉल्ड रिसोर्सेज. उन रिसोर्सेज में वीडियोस और हर एक चीज का प्रोसेस मतलब स्टेप टू स्टेप मेंशन्ड है कि दिस इज हाउ द बल्क IDs विल बी क्रिएटेड. बट यस, टू क्रिएट अ बल्क IDs आपको पूरा वर्कफोर्स और कैपेसिटी बिल्डिंग करानी पड़ेगी. यू हैव टू हायर सम गुड स्टाफ who is competent enough to handle these digi lockers and everything. But once the cross linking is done, एक बार सिस्टम प्लेस में आ जाएगा, फिर तो इट इज ऑन फॉर एवर. तो आपको थोड़ा सा टेक्निकल वर्क इसमें इन्वॉल्व है और वो ट्यूटोरियल्स और स्टेप्स को आपको डाउनलोड करिए और सारे सबको ईमेल करवाइए जो भी टीम है, और उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग हो कि आपको क्या समझ में आया, कैसे करना है. थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल रहेगा, थोड़ा सा सपोर्ट रहेगी. एंड UGC चेयरमैन हैज वेरी क्लियरली मेंशन्ड कि अगर किसी को कहीं पे कोई स्पेसिफिक इशू आ रहा है तो वो खुद सॉल्व करवा देंगे. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट बिकॉज ही वांट्स द एंटायर universities, at least the central universities, to become a role model for the entire education setup कि इन्होंने ABC पोर्टल को रियलिटी बनाया है. So he is mainly focusing on the central universities and the state universities to be called as a model. तो आपको हेल्पलाइन नंबर्स, उनकी ट्यूटोरियल्स, उनका वो सारा चीजें डाउनलोड करवाइए, उसको देखिए, उसमें सारे स्टेप्स मेंशन्ड है एंड दे आर वेरी यूजर फ्रेंडली. They are very user friendly. Plus, I will also give you some numbers. Because I am an NBA assessor, so I go for the visits for the accreditation in the Government of India team. तो मैं अभी पीछे भी एक यूनिवर्सिटी में गई थी, cannot name that because of the secrecy, but मैं उनसे आपको वो नंबर्स लेके दूंगी जिन्होंने ABC को इम्प्लीमेंट किया है, और ABC को इम्प्लीमेंटेशन के जो इश्यूज आते हैं, ऑपरेशनल इश्यूज आते हैं, उन्होंने किसके थ्रू सॉर्ट किया है. So we'll share the numbers with you so that you can form a team and start start working, because we have very less time left. So we have to be prepared. और अगर हम prepared रहेंगे तो हमें किसी भी प्रॉब्लम को, हमें ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, but we have to make the systems in place. Because you have just said that digital university will be coming within 2 or 3 months. Admissions of our university will start because the portal, it has been declared by the university. Ongoing, वहाँ पे ongoing रहता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 2 महीने बाद भी बच्चे कर सकते हैं, 3 महीने बाद भी कर सकते हैं. So it will be an ongoing thing. So means in our admission form, we are supposed to put one of the column ABC. One column. IT. It is always to have a provisioning before it is late. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you very much. So all of you, please join that WhatsApp group. Thank you so much, ma'am, for giving your precious time. Now I would like to invite Dr. Mamta Sharma for formal vote of thanks. Mamta ma'am, over to you. Thank you. Thank you, Dr. Anuradha. ABC
is a game changer for the students, a very flexible and a very dynamic one. It is a student-friendly, learner-centered learning approach, and it ensures multidisciplinary, holistic education. This facilitates the movement of the students in and out of the programs and from one program to the other, thus giving them multiple entry and exit options. As we have learned today, academic bank of credit means the academic service mechanism as digital, virtual, online entity established by the University Grant Commission to facilitate the students to become its academic accounts holder, thereby paving the way to seamless students' mobility between and within the degree, granting higher education through the formal systems of credit recognition, credit accumulation, credit transfer, and credit redemption to promote distributed and flexible teaching learning. ABC is a bank of academic purposes. On the pattern of the commercial banks for the financial purposes, with students as academic account holders and to whom the ABC shall provide a variety of services, including credit verification, credit accumulation, credit transfer or redemption, and authentication of academic awards. First of all, I would like to thank Dr. Kiran for this very fruitful collaboration with Aditi Mahavidyalaya, and I'm very sure that it is going to go a long way. I take this opportunity to thank Professor Namita Rajput for her enlightening talk for our fellow teachers, views about ABC, every nitty-gritty, and the digital university. Then, thanks to the convener of this workshop, this program, this national workshop, Dr. Anuradha, co-convener, Dr. Nishu Bansal. I'm very hopeful that all of us have learned a lot, hoping to make higher education a hub of lifelong learning. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. I request Nishu ma'am to share feedback link again and an announcement for the participants that WhatsApp link is working and more than 40 participants have joined in just 5 to 10 minutes. And I also thank all the participants for being here, and the meeting will be open for next 10 minutes so that you can fill the feedback form. Thank you, everyone. My dear Anuradha, you because there are more than 100 participants, so because our Zoom capacity was of 100, Right. YouTube link is also there. So Right, people, ma'am, and if somebody wants to see the lecture, it is very much there in the YouTube. Right, ma'am. We have shared the YouTube link in the chat box, as well as I'll share the YouTube link in the WhatsApp box also. And I have shared the YouTube link with Namita ma'am also. So you can share it with other participants, ma'am. Thank you so much. Thank you. Right. Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you, Mamta ma'am.
ਇਹ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬਈ? ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ।